so far in the classes, we all have covered till the age of Milton. Yesterday, we finished Paradise Lost and some of the other important yet minor writers from the age of Milton, also known by the name of Civil War and Interregnum. ठीक है, तो इन चीज़ों को हम cover कर चुके थे. We tried taking a look at certain other important quotes which are associated with Paradise Lost. We tried discussing about certain essays, prose writers such as Thomas Hobbes, Isaac Walton, right, Robert Burton की Anatomy of Melancholy, etc. ठीक है, सो इन सब चीज़ों को आई होप दैट यू गाइज हैव डन द समरीज जो कल होमवर्क में दी गई थी. आज वी विल बी, एंड ऑफ कोर्स आई आस्क्ड यू ऑल टू गो थ्रू certain pages from your books of British literature for the age that we are to do, that is the age of Pope and Johnson. ठीक है, which is known by the name the age of enlightenment. ठीक है, तो enlightenment की age मैंने आप लोग को बताया था. why are we seeing enlightenment happening in 1700s 1800s? it is because of the fact that लोग question करने लग गए हैं अब चर्च की अथॉरिटी को. ठीक है, पीपल हैव कम टू नो दैट यस ऑफ कोर्स दीज आर सेवरल फैक्ट्स. ठीक है, हम लोग को करप्ट किया जा रहा था इतने सेंचुरीज से. ऑल्सो नॉट जस्ट दैट, बहुत सारी चीज़ें होंगी. आज की क्लास में हम इसी लिटरेरी डिस्कशन को आगे मूव फॉरवर्ड करेंगे. ऑल्सो वी विल बी टेकिंग अ लुक एट सर्टेन इम्पॉर्टेंट, ये एज जो है will be marked by the writings of magazines, periodicals that will be published. ठीक है, so writing बड़ी flourish होगी. people इसको न्यू क्लासिकल एज भी कहते हैं. now why are people calling it न्यू क्लासिकल एज? it is because of the fact बच्चे that हम लोग पहले डिस्कस करते हैं. ये है आपकी एज ऑफ पोप, एज ऑफ एनलाइटनमेंट. ठीक है, अगर हम इसको डील करने की कोशिश करें, एनलाइटनमेंट का मतलब होता है आपको किसी चीज के बारे में जागरूक हो जाते हो. यू गेट अवेयर अबाउट सर्टेन फैक्ट्स, facets of reality, etc. so this age that we are going to do will be known by अलग अलग नाम. it will be known as the age of enlightenment, it will be known as the age of pope, age of reason. ठीक है, अलग अलग नामों से इसको जाना जाएगा. जैसे for instance we have, it will be known as the age of reason because people will start thinking rationally. On the other hand, we also get to see that there are certain measures of what we know as a human intellect. ठीक है, ह्यूमन इंटेलेक्ट भी मेजर करी जाएगी इसी पॉइंट ऑफ टाइम पे, एंड लोग क्वेश्चन करने लग जाएंगे. ठीक है, अच्छा मेरा एक क्वेश्चन था, आई होप दैट यू गाइज हैव कवर्ड दैट. एक फैक्ट जो मैं चाहती हूँ आप लोग नोट डाउन कर लें, जो हमने नहीं नोट डाउन करा है इन पैराडाइज लॉस्ट बिकॉज इट वाज अ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन. ये बुक आती है बुक नंबर 11, एंड इन बुक नंबर 11 ये एज ऑफ मिल्टन के साथ ही लिख लो. जो बुक 11 है आपकी पैराडाइज लॉस्ट की, उसमें व्हाट वी गेट टू सी इज, बुक 11 में हम लोग को ये चीज देखने के लिए मिलती है दैट मिल्टन इज यूजिंग अ लाइन विच ही सेज दैट आगरा एंड लाहौर ऑफ ग्रेट मुगल. आगरा ये कौन सी, ये क्वेश्चन आया था इन विच बुक दिस पर्टिकुलर कोट इज यूज्ड. ठीक है, इस पॉइंट ऑफ टाइम पे ड्यूरिंग द एज ऑफ मिल्टन लाहौर फोर्ट वाज बिल्ट. ठीक है, टू पैकवान ऑन, इसकी पूरी मैं आपको लाइन लिखवाती हूँ. टू पैकवा ऑफ सीनियन किंग्स and thence to Agra and Lahore of great Mughal. ठीक है,
we get to see that herein Milton is trying very, because of his grand style, what we get to see here is that Milton is trying to make use of the present time period where the Lahore fort is built, और उसका amalgamation कर रहे हैं with the biblical history. How beautifully he has done that. And what he has done is कि उन्होंने of course we see biblical story हमको सिखा रहे हैं इस particular book में, book number 11 में, तो हमें वैसे ही माइकल के visions जो है वो देखने के लिए मिल रहे हैं, ठीक है. तो माइकल के visions, माइकल आके बताता है ना, जब Adam and Eve, they have committed the crime, they have committed the sin. Now when they come, they see Michael also coming. तो Michael जो है वो Eve को, he puts her to sleep, and then eventually what happens is that ये लोग क्या करते हैं, ये आपस में they have conversations where Michael is trying to show him the images of Cain and Abel. Cain and Abel were the sons of Adam and Eve जब वो अर्थ पे आते, तो फ्यूचर के विजन्स दे रहे हैं. तो how beautifully Milton thought that मेरी एज में 1600s में लाहौर फोर्ट बिल्ड हो रहा है मुगल्स का. तो people have started to come or get acquainted with the Indian lands, because एलिजाबेथन चार्टर एक्ट के बाद की बात है ये. 1600 में हमारी क्वीन एलिजाबेथ 1603 शी डाइड, एंड बिफोर डाइंग 1558 से इंडिया में भी उनका राज फैलना शुरू हो गया था धीरे 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 करके, ठीक है. इवन इफ दे वर कमिंग एज ट्रेडर्स और मर्चेंट्स ड्यूरिंग दैट पर्टिकुलर टाइम पीरियड एज वेल, पीपल वर नाउ नोइंग इंडिया, ठीक है. पीपल वर नाउ नोइंग इंडिया with its richness, which they used to call that this richness is something which is really very strange, ठीक है. बड़ा exotic land है इंडिया. exotic सेंस में इसलिए कहते थे क्योंकि यहाँ पे हमारे बंजारे लोगों को देख के, ठीक है, अग्रेरियन कम्युनिटी को देख के, so they thought that there is no sense of living civility इन लोगों में, civilization का concept नहीं है properly, ठीक है. तो इस context में जब वो लेके जाते थे, they used to take these ideas, these thought processes about India to England and other parts of the world. So Milton used to come to know about that, ठीक है. Milton हो गए, बाकी writers भी या पढ़ते थे वो किताबें about India. So now he knew that उनके time period पे ये लाहौर बिल्ड, ये लाहौर फोर्ट जो है बिल्ड हो रहा है, तो why not mix history, क्योंकि माइकल तो ऑलरेडी विजन्स बता रहा है फ्यूचर की, तो why not incorporate this thing also in the same. क्योंकि मैं इसका नाम इसलिए ले रही हूँ क्योंकि गैलीलियो का भी PYQ आया है, आगरा एंड लाहौर ऑफ ग्रेट मुगल्स. किसी ने एक्सपेक्ट नहीं करा था, ये 2021 का PYQ है, ठीक है. ये आपका, मैंने इसीलिए मुझे पता था कि ये चीज हमने कल कवर नहीं करी, दैट्स व्हाई आई बिगेन द क्लास. ये PYQ है आपका 2021 का, ठीक है. ऑलराइट, अब बिगिन करते हैं एज ऑफ रीजन, क्योंकि लोग इसमें रीजनल रैशनल तरीके से सोचने लग जाएंगे, ठीक है. इट विल बी नोन एज द एज ऑफ सेंसिबिलिटी बिकॉज पीपल विल बी व्यूइंग द ब्यूटी अराउंड. viewing the beauty around. Then we have, it was known as the age of transition. इस एज को आप एज ऑफ ट्रांजिशन भी बोलोगे. अच्छा, एक चीज आपको याद रखनी है, एज ऑफ पोप एंड जॉनसन. एज ऑफ पोप ट्रांजिशन वाली एज एज सच नहीं थी, एज ऑफ जॉनसन विल बी द एज ऑफ ट्रांजिशन, बट टुगेदर दे आर नोन एज नियो क्लासिकल एज. अच्छा, ट्रांजिशन की एज क्यों कहेंगे हम, क्योंकि यहाँ से अब जो लोग सोच रहे होंगे इनलाइटेंड वे में, लॉफ्टी स्टाइल में दे विल बी राइटिंग, यहाँ पे क्या होगा अब, व्हेन इन दी 19th सेंचुरी, अगली सेंचुरी हमारी कौन सी आ रही है ना, 18th सेंचुरी आ रही है, सॉरी, है ना. तो उस 18th सेंचुरी में, यानी कि 1798 में जब लिरिकल बैलेड्स पब्लिश की जाएगी बाय विलियम वर्ड्सवर्थ एंड एस.टी. कोलरिज, जस्ट अ मोमेंट. तो जब ये पब्लिश करी जाएगी, उस पॉइंट ऑफ टाइम पे क्या होगा, जब ये पब्लिश करी जाएगी हमारी, तो उस पॉइंट ऑफ टाइम पे वी गेट टू सी दैट ऑल दीज मेरा ट्रेन ऑफ थॉट ब्रेक हो गया. ये लिरिकल बैलेड्स जब पब्लिश करी जाएगी, उस पॉइंट ऑफ टाइम पे इट विल बी मार्क्ड एज फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स मेन शुड बी यूजिंग द लैंग्वेज ऑफ मेन. विलियम वर्ड्सवर्थ यही बोलेंगे अपने वर्क में कि मैं लैंग्वेज वो यूज करूंगा अपने वर्क्स में, एवरीडे यूजेज ऑफ मैन, द रफ लैंग्वेज, ठीक है, द रॉ लैंग्वेज. सो
इसको एज ऑफ ट्रांजिशन इसलिए बोला जाएगा क्योंकि फ्रॉम जॉनसन टू रोमांटिक एज या फ्रॉम पोप जॉनसन टू रोमांटिक एज, फ्रॉम दिस लॉफ्टी राइटिंग स्टाइल टू सिंपल एवरीडे स्पीच मूव किया जाएगा, ठीक है, इसलिए इसको एज ऑफ ट्रांजिशन भी बोला जाता है, ठीक है। Then we have, it is also known as the neoclassical age. It is also known as the neoclassical age. अच्छा, neoclassical age का भी एक फंडा आपको बता दूं मैं। अब नियो क्लासिकल एज आपकी कब से स्टार्ट हो जाएगी? वैसे तो जब मिल्टन की एज खत्म होगी, हम लोगों ने हिस्ट्री कहाँ पे छोड़ी थी? 42 में थिएटर्स शट हो गए, 49 में चार्ल्स वन डेड, देन 1660 में मोनार्की इज रिस्टोर्ड व्हेन चार्ल्स टू सन ऑफ चार्ल्स वन कम्स बैक फ्रॉम हिज एग्जाइल फ्रॉम फ्रांस। दिस इज वेयर वी लेफ्ट ऑफ। नाउ दिस 1660, ठीक है, आपकी एज ऑफ रेस्टोरेशन, एज ऑफ जॉनसन एंड पोप, ऑल दीज थ्री एजेस, आपकी ड्राइडन की एज, ठीक है, मेटाफिजिकल वाली रेस्टोरेशन एज, योर एज ऑफ पोप, योर एज ऑफ जॉनसन, दीज थ्री are together used as an umbrella term of neoclassical age. Neoclassical age क्यों कहा जा रहा है? Who are the classical writers we are talking about in here? हम लोगों ने कभी ना कभी तो सुना होगा ना कि ये क्लासिक्स है, इनकी बुक्स या इनकी ये क्लासिकल वर्क लिखा हुआ है। कैन यू आइडेंटिफाई एनी टिल द टाइम आई आस्क फॉर द टैब? अगर कोई ऑनलाइन है, आई आस्क फॉर द टैब। हाँ, फिगर आउट करो, सोचो, पढ़ा होगा अगर अपने उसमें क्या कहते हैं, बुक में या कहीं से। I'm not talking about neoclassicals. I'm talking about who can you consider to be the classical writers. किनको कंसिडर करते हो आप लोग? हाँ, do you consider Homer, Virgil, Horace as the classical writers? ठीक है, so what happened here was that people were imitating the styles of Homer, Homer's Odyssey जैसे होता है, वर्जिल ने एनियड लिखी है मेन उनकी, हॉरेस की आर्स पोएटिका, द आर्ट ऑफ पोएट्री एटसेट्रा। सो पीपल वर इमिटेटिंग देयर राइटिंग स्टाइल्स। जैसे हमारे अलेक्जेंडर पोप, he will write the rape of the lock getting inspiration. It will be known as the, एक नया genre इस time पे establish होगा, that this particular poem is known as the mock epic poem. Now why is it known as the mock epic poem? These people, Homer and Virgil, they used to write epic poems. Epics now used to be very much बड़ी 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 बुक्स पोइट्री के ऊपर लिखी जाती थी, and these were the ones who were using lofty style, using grand, elaborated, embellished words in their languages. ठीक है, all right, so I do have the tab. It, if any one of you is online तो आप मैसेज पे बता सकते हैं। So these people were already writing in बड़े बड़े वर्ड्स, भारी भारी वर्ड्स, इतनी इतनी बुक्स, जैसे होम वर्जिल ने एनियड लिखी है जिससे मिल्टन गॉट इंस्पिरेशन फॉर राइटिंग पैराडाइज लॉस्ट इन 12 बुक्स, बिकॉज एनियड बाय वर्जिल, एनियड नाम की जो बुक है, इट इज एन एपिक बुक, ठीक है, विच इज ऑल्सो in 12 books का format, so from which Milton took the inspiration. So these people in this age, अगर हम mock epic की बात करते हैं,
तो एपिक लिखी जाती है जिसका सब्जेक्ट बहुत बड़ा होता है, ग्रैंड सब्जेक्ट होता है. जैसे फॉर एग्जाम्पल इफ वी टेक मिल्टन्स पैराडाइज लॉस्ट फॉर एग्जाम्पल, बिकॉज वी हैव रिसेंटली कवर्ड इट. सो इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ एन एपिक पोम स्टार्टिंग इन मीडियाज रेस्ट. ठीक है, ये हमने कवर करा था. अब एपिक पोम है, so you guys get to see that the grand style of Milton, using so much heavy vocabulary, and not just vocabulary, dividing the entire work in 12 sets of books. We also see the theme, the subject matter of man's first disobedience, such a heavy subject to write upon. ठीक है, so that is known as epic. serious form में होती है epic. मॉक एपिक होती है कि आप एपिक स्टाइल को मॉक करके लिख रहे हो. तो यहाँ का सब्जेक्ट मैटर जो अलेक्जेंडर पोप विल राइट इन रेप ऑफ द लॉक, सो वो किस तरीके का कॉन्सेप्ट लिखेंगे. ही विल बी राइटिंग इट अ मॉक एपिक. तो एक लड़की है, ठीक है, एराबेला फर्मर के ऊपर ये बेस्ड थी कहानी. रियल लाइफ इंसिडेंट ऑफ दी 18th सेंचुरी. अगर हम देखते हैं इन 1700s में, तो ये एक लड़की थी एराबेला फर्मर. उसको लॉर्ड पेट्रे ने उनके उस पॉइंट ऑफ टाइम पे, यू गाइस वुड हैव सीन, आई विल शो यू बिलिंडा. अगर हमको ऐसे, नॉट द रियल बिलिंडा ऑफ कोर्स, एराबेला फर्मर. So see, this is what happened. Look at this image. This will be the rape of the Lord. So what happens here is that Arabella Farmer, this was the lady, I think. ठीक है, एराबेला फॉर्मर, दिस वाज द लेडी. इनके बाल लटों वाले थे. ठीक है, उस पॉइंट ऑफ टाइम पे यू यूज्ड टू गेट योर हेयर्स कर्ल्ड, कर्लर लगा के फिक्स करके, बड़े अच्छे अच्छे से कर्ल्स होते थे ना, क्वींस एंड लेडीज एंड एवरीथिंग, व्हिच यूज्ड टू बी व्हाट डू वी कॉल इट, व्हिच यूज्ड टू बी एक symbol of that you are full of vanity, a symbol of that you are well put together, so on and so forth, अच्छे घर के हो, है ना. तो ये सारी चीजें होती थी. तो what happened here was that Arabella Farmer के कुंडलों वाले बाल थे, कर्ली हेयर थे. So there was this Lord Petre, उनको सूजी मस्ती, he really loved he was like, I want one of those. So I think जो मुझे थोड़ा सा याद है उसमें ये होता है कि he liked collecting different things. तो उन्होंने कहा कि मुझे ये बाल की लट चाहिए. So he chopped off one lock of hair he chopped, and because of that family dispute happened, and उस बेसिस के ऊपर हमारे अलेक्जेंडर पोप जो है रेप ऑफ द लॉक लिखेंगे. दैट्स व्हाई द सब्जेक्ट मैटर इज रियली वेरी फनी एंड नॉन सीरियस. दैट्स व्हाई इट इज नोन एज द जॉनरा ऑफ बीइंग अ मॉक एपिक पोम. ठीक है, तो ये आ जाता है हमारा, क्योंकि ये स्टाइल उनका ही है. स्टाइल हमारे वो वाले राइटर्स का ही है जो हमें देखने के लिए मिल रहे हैं, है ना. लेकिन स्टाइल वही है, लेकिन लिख वैसी थीम्स पे रहे हैं. ठीक है, एपिसल्स टू डॉक्टर आर्बुटनॉट भी लिखेंगे, क्योंकि यूजुअली हॉरेस रोमन राइटर हैं. ठीक है, इन्होंने एपिसल्स लिखे थे. एपिसल्स वर यूजुअली रिटन इन द लेटर फॉर्म. ठीक है, सो फ्रॉम एपिसल ये स्टाइल उठाएंगे एंड ही विल राइट फॉर दैट. देन वी हैव, इसको एज ऑगस्टन भी बोला जाता है. पोप एंड जॉनसन की तो बोला ही जाता है एज. इट इज ऑल्सो नोन एज द एज ऑफ पोप एंड जॉनसन, बिकॉज ये दोनों लिख रहे थे ड्यूरिंग दिस टाइम पीरियड. नॉट जस्ट दैट, इट वॉज ऑल्सो नोन एज, तो ये सारे नाम देखो आप, it was also known as the Augustan age. Now why Augustan age? Because here in you see, मतलब basically it this, क्योंकि neoclassical, ये जो neoclassical writers थे, they were during the time period of Emperor Augustus. ठीक है, so Emperor Augustus के time period के writers थे. तो the name of this age also goes by this particular title, Emperor Augustus के basis पे. Note down these names till the time I have my sip and share of coffee. ठीक है, 2 मिनट नोट डाउन करो and then we'll move forward. ठीक है,
अब आगे बढ़ते हैं। ऑगस्टन एज भी दिया हुआ है, एज ऑफ सेंसिबिलिटी। नाउ हिस्टोरिकल जो बैकग्राउंड है वो मैं आपको सिंपलेस्ट मैनर में समझाने की कोशिश करूंगी, क्योंकि यहाँ से फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड ज़्यादा हिस्ट्री इंपॉर्टेंट होने वाली नहीं है, ठीक है। वी विल मतलब एज ऑफ ऑगस्टन, दिस एज ऑगस्टन एज तक थोड़ी सी हिस्ट्री इंपॉर्टेंट रहेगी। रोमांटिक एज में जो हिस्ट्री आएगी उसमें फिर ज़्यादातर हमारे कुछ रिफॉर्म बिल पास होते हैं, अगर इफ़ देर आर एनी जो सफरेज के लिए राइट्स वुमेन आर फाइटिंग फॉर, वो सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट हो जाएंगी हिस्टोरिकली, ठीक है। सो फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स हिस्ट्री विल बी अ लिटिल लेस एज कंपेयर टू द डिटेल्ड वन वी कवर्ड इन द लास्ट लेक्चर्स, ठीक है। अच्छा, अब इस एज में आप देखेंगे कि क्वीन एन विल बी रूलिंग, विच ऑफ कोर्स हैज बीन गिवन इन योर बुक। अगर आपको इस तरीके से चार्ट बनाना है तो चार्ट बना के, मतलब जो भी जैसे मैं बना रही हूँ वैसे करना है, तो दैट्स योर कॉल, बट अंडरस्टैंड करना है सारी चीज़ों को, ठीक है। सो क्वीन एन 1702 टू 1714 तक इन्होंने रूल करा था, 1702 से 1712 तक शी रूल्ड, ठीक है। एंड वी सी अ मेंशन ऑफ क्वीन एन, इनका मेंशन आता है, mentioned in, she has been mentioned in Alexander Pope's work The Rape of the Lock. She's been mentioned in this particular work. Now what we get to see moreover is that she was a woman, ठीक है। इनके एज में आप लोग को कुछ इंपॉर्टेंट ईयर्स मैं क्रोनोलॉजिकली लिखवाने वाली हूँ, विच हैव नॉट येट बीन प्रोवाइडेड इन योर बुक, तो उसको लिखें। 1701 की बात करते हैं, 1701। In 1701 the Act of Settlement was passed, जिसमें क्या बात करी गई कि प्रोटेस्टेंट एंड हैनोवरियन जो डिनेस्टीज हैं इनको एक कर दिया जाएगा, एक मोनार्की जो है वो एक कर दी जाएगी। तो प्रोटेस्टेंट्स एंड हैनोवरियन सोसाइटी, जहाँ से ये क्वीन एन विल बी स्टुअर्ट, बट जॉर्ज एक किंग आएंगे, हैनोवरियन किंग, ठीक है, जो क्वीन एन के बहुत दूर के रिश्तेदार होंगे। सो शी कुड नॉट फाइंड एनी नियर एंड डियर रिलेटिव ऑफ हर्स, तो वो चीज़ जो है हमें यहाँ पे देखने के लिए मिलेगी। नोट डाउन करें, 1701 द एक्ट ऑफ सेटलमेंट वो पास किया जाता है, दैट प्रोटेस्टेंट्स एंड हैनोविरियन डिनेस्टी जो है वो मोनार्की चलाएगी, ठीक है। देन 1707, this is a very important year, 1707 is really important। एक एक्ट ऑफ यूनियन पास किया जाता है, द एक्ट ऑफ यूनियन। यूनियन किसका? यूनियन ऑफ स्कॉटलैंड एंड इंग्लैंड। तो अब स्कॉटलैंड एंड इंग्लैंड को जो है एक ही उसमें मिला लिया जाता है। अच्छा, ये क्यों हो रहा है? बाय द वे, आप लोगों ने देखा होगा दैट आफ्टर क्वीन एलिजाबेथ द रूलर दैट वी हैड वाज जेम्स वन ऑफ इंग्लैंड एंड जेम्स सिक्स ऑफ स्कॉटलैंड। तो वहां से थोड़ी ये चीज होनी शुरू हो जाती है, ठीक है। बट हियर नाउ बिकॉज इंग्लैंड एंड स्कॉटलैंड दे वर अ लिटिल बिट, इंग्लिश पीपल यूज्ड टू थिंक ऑफ द Scottish people and looked down upon them. So later on in the centuries we get to see that things are changing and this becomes one, ठीक है। और इसको नाम दे दिया गया the Great Britain. On the other hand, now 1714 में क्या होता है? क्वीन एन शी डाइज। क्वीन एन, यहाँ पे मैंने 12 लिखा ना, वही मैं देख रही हूँ, 12 नहीं है 14 है।
यहाँ पे सही कर लेना, ये 14 था, ठीक है. Now in 1714 Queen Anne dies. I'll show you certain videos related to her ताकि आपको थोड़ा clarity of thought मिले. She becomes the last Stuart monarch. Stuarts were from Scotland. Scotland क्योंकि Mary Queen of Scots was a Stuart herself, ठीक है. एंड देन इनके बाद किंग जॉर्ज आते हैं, किंग जॉर्ज वन. he rules from 1714 to 27. And then we have King George II, who rules from 1760 to 1820. So note this down. Note this down. First of all, we'll try to take a look at the history of Queen Anne. So let's थोड़ा कम रखते हैं, वैसे भी मैं इंक्रीज करती हूँ. Queen Anne history. मैं बताती हूँ. The channel that I used to watch it from was history of this one. Anne was born on February 6, 1665, at St. James's Palace in London, England. The 18th. Anne was born on February 6, 1665, at St. James's Palace in London, England. She was the second daughter of James, Duke of York, and his first wife, Anne Hyde. Her father would later become King James II, and her mother was the daughter of Edward Hyde, who served as Lord Chancellor under Charles II. Anne had a difficult childhood marked by the upheavals of the Glorious Revolution and her father's deposition in 1688. She and her sister Mary were raised as devout Anglicans, but their father's Catholicism and his attempts to promote religious tolerance in England led to his unpopularity and eventual overthrow. Anne was shy, conscientious, stout, gouty, short-sighted, and very small. Anne married Prince George of Denmark in 1683, and they had many children, with only one survived past infancy. She had 17 pregnancies in total. Their son, Prince William, Duke of Gloucester, died in 1700, aged 11 of smallpox or hydrocephalus, which contributed to the instability of the succession during Anne's reign. Her marriage was not a happy one. Her husband, Prince George of Denmark, was said to be a drunk and a bore. Anne's sister, Mary, and Mary's husband, William of Orange, ascended to the throne in 1688 as joint monarchs, in what is known as the Glorious Revolution. Anne became heir presumptive to the throne after the deaths of her brother and sister, and she succeeded to the throne in 1702, following the death of William III. Anne's coronation was on St. George's Day, the 23rd of April 1702, in Westminster Abbey. She was affected by gout at the time and was carried into Westminster Abbey on a sedan chair. She was 37 at the time she succeeded to the throne. Anne's reign was marked by the War of the Spanish Succession, 1701 to 1714, a conflict between European powers over the succession to the Spanish throne. The war was fought mainly in Europe, but it also had implications for Britain's colonial ambitions in North America. Anne supported the Grand Alliance against France in the war and helped to secure the succession of the House of Hanover to the British throne. The Hanoverians were distant relatives of the Stuarts and were seen as a Protestant alternative to the Catholic claimants to the throne. During Anne's reign, the Acts of Union were passed, which joined England and Scotland into a single political entity, known as Great Britain. This was a significant development in British history, as it laid the foundations for the modern United Kingdom. Anne was a staunch Anglican and supported the Church of England, which led to tensions with nonconformists and dissenters. She was also a strong advocate for the Act of Settlement, which barred Catholics from the British throne. Anne suffered from poor health throughout her life, including bouts of gout and other ailments. She was often unable to attend to her duties as queen.
which led to the rise of powerful ministers and advisors who wielded significant influence over her government. Anne was known for her close relationships with her female friends and advisors, including Sarah Churchill, Duchess of Marlborough. This and name is Abigail important, Massey. Sarah Churchill. These relationships were the subject of much speculation and gossip about lesbianism during Anne's reign, and they were also the source of political intrigue and controversy. Anne's relationship with Sarah Churchill deteriorated over time, leading to a bitter falling out between the two women. Sarah was one of Anne's closest confidants and advisors, but their friendship was strained by political differences and personal grievances. She was a patron of literature and drama, and her reign saw the emergence of major literary figures like Jonathan Swift, Alexander Pope, and Daniel Defoe. The political parties of Anne's reign were characterized by bitter rivalries and conflicts, which often spilled over into personal animosity and even violence. The most famous example of this was the bitter feud between Anne's friend and advisor, Sarah Churchill, and the Whig politician Robert Hyde. The Tories were the party that generally supported the monarchy, the Church of England, and a strong national defence. They were also opposed to the growing power of the merchant and commercial classes in Britain, which they saw as a threat to traditional values and social order. The Whigs, on the other hand, were the party that generally supported the interests of the commercial and merchant classes, as well as religious tolerance and constitutional reform. They were also more open to the idea of limited government and greater political participation by the middle classes. Anne's government was also marked by corruption and patronage, with powerful ministers and advisors using their positions to enrich themselves and their allies. This led to widespread public disaffection and contributed to the growth of anti-government sentiment in Britain. Despite these challenges, Anne's reign saw significant advances in the areas of trade and commerce, with Britain emerging as a major player in the global economy. The growth of trade and industry also led to the rise of the middle classes, who became an increasingly important political force in Britain. Anne's reign also saw significant developments in the field of science, with the emergence of major figures like Isaac Newton, Robert Boyle, and Edmund Halley of Halley's Comet fame. These scientists made groundbreaking discoveries in the areas of physics, chemistry, and astronomy, laying the foundations for modern science and technology. Anne's reign came to an end in 1714, with her death on August 1st of that year. She suffered a stroke earlier in July and was unable to walk or speak. She was 49 and the last of the Stuarts to reign. She was succeeded by her distant cousin, George I of Hanover, who became the first Hanoverian monarch of Britain. Anne's legacy as queen is a complex and contested one, marked by both achievements and failures, and her reign continues to be the subject of scholarly debate and popular interest. Her reign saw the creation of Great Britain. Britain became a major military power, and she laid the foundations for the 18th century's golden age. So what we see here is that ये जो Protestants and Hanoverian dynasty है, we get to see that this act of settlement mainly meant that no Catholics from now onwards will be the kings. ठीक है, अब से सिर्फ और सिर्फ प्रोटेस्टेंट्स आर गोइंग टू बी द किंग्स. ठीक है, स्पेनिश रेवोल्यूशन हुआ. ग्लोरियस रेवोल्यूशन क्यों आता है? 1660 के बाद जो आपकी एज आप करोगे, कवर करोगे विद आंचल, यू गाइस विल बी टेकिंग अ लुक एट विलियम ऑफ ऑरेंज और इनकी जो सिस्टर थी मैरी. ठीक है, both of them they will be ruling as joint monarchs. So we'll be taking a look at a small 5-minute video of the glorious revolution to make you all understand what was the historical significance. but पहले ये चीज देख लेते हैं. किंग जॉर्ज वन जो है, इनका ये important point है that he was the first Hanoverian king. ठीक है, and with Anne, because she was a Stuart, she was somewhere or the other, यहाँ पे उनकी जो है Stuart monarchy खत्म हो जाती है. ठीक है, I want to show you all this. एक और चीज थी, तो पहले ग्लोरियस रेवोल्यूशन को देख लेते हैं. अंकल मेरी चाबी. हेनरी द एट्थ पता है ना सबको? हेनरी द एट्थ, फादर ऑफ क्वीन एलिजाबेथ. ठीक है, चलो दोबारा देखते हैं. आई जस्ट 1534, King Henry VIII
overthrow churches and their wives, broke with Catholicism, and declared himself supreme governor of the Protestant Church of England. For the next 150 years, conflict over England's state religion plagued the country. But in this video, we'll cover the climax of that conflict and find out why the glorious revolution was so glorious. Last week, we looked at the English Civil War, which concluded with Charles II restored as King of England. Like his father, Charles I, Charles II favoured toleration of Catholics, though Charles I's toleration of Catholicism did play a not insignificant part in getting his head chopped off. So, yeah, this already sounds like it's going to go well. Charles II died in 1685, and despite the fact that he had many children, he was succeeded by his brother, James II, as they were all illegitimate, real pious guys. James II had converted to Catholicism in the 1660s after being exposed to religion whilst living abroad in France. So you should know that when we try discussing about this thing, ये थोड़ा सा important हो जाता है आपके लिए जानना, that after Charles II, now he came from France, we tried talking about that. Charles II आपको as a character भी in one of the restoration plays देखने के लिए मिलते हैं, ठीक है. तो Charles II जो है, he had many illegitimate children, and because of that now जो power है वो किसको जाएगी? Of course, अब Charles the First had two sons, एक Charles the One और दूसरे थे इनके James II. So now the power will eventually go to James. James will, जब 1682 में Charles II dies, the power goes to James II. 1682 में he becomes the king, क्योंकि illegitimate children were not allowed to be the part of the monarchy. ठीक है, so this thing happened. चलो. When he came to the throne, Parliament, in spite of his religion, was initially supportive of the new king. Remember, England had just suffered a series of civil wars and 10 years of dictatorship by Oliver Cromwell, so no one was really eager to see the start of yet another conflict between the king and Parliament. It also helped that James's children, Mary and Anne, were both raised as Protestants, and his eldest, his likely successor, Mary, was married to the Protestant stadtholder of the Netherlands, William of Orange. William of Orange did not have a good relationship with his father. Early in James, तो यहाँ से हमें क्या चीज़ देखने के लिए मिलती है? That James II की दो बेटियां होती हैं, ठीक है. James II had two daughters, एक होती है मैरी, ठीक है, मैरी द सेकंड, एंड दूसरी है हमारी एन. तो नाउ मैरी, शी विल मैरी आपके विलियम ऑफ ऑरेंज. चलो आगे चलते हैं. एंड बोथ ऑफ देम, ये चीज इंपॉर्टेंट है तो नोट डाउन, दैट मैरी एंड एन, बोथ ऑफ देम, क्योंकि चार्ल्स वन कैथलिक थे, जेम्स सेकंड जो थे प्रोटेस्टेंटिज्म को सपोर्ट करते थे. तो अब ऑफ कोर्स लोगों को प्रोटेस्टेंट क्वींस चाहिए थी, ठीक है, प्रोटेस्टेंट मोनार्क चाहिए था. सो दिस थिंग हैपेंड. Two rebellions broke out against him, one in England and one in Scotland. But both were given tacit support by William and his father. Early in James II's reign, two rebellions broke out against him, one in England and one in Scotland. But both were given tacit support by William, and both initially launched their attacks from the Netherlands. The Scottish rebellion only involved about 300 men, and it was defeated by the increasingly professional English army within just days of its beginning. The English rebellion, on the other hand, was considerably more dangerous to James. It was led by the Duke of Monmouth, an illegitimate Protestant son of Charles II, James's nephew. He claimed the English throne and went so far as to crown himself king on June 11, 1685. Of course, to be a king, one needs a kingdom, and the Duke didn't have that. England as a whole remained loyal to James, and his army crushed the Monmouths nearly as easily as it had the Scots. The Duke of Monmouth was executed for treason on 15th of July, 1685,
only a month after trying to seize the throne. The two rebellions, while easily beatable, still really got under James's skin, and he turned that anger towards the Dutch. After all, William of Orange could have easily stopped both rebellions from even beginning, and yet he didn't. But that wasn't the only reason to be mad at the Dutch. England and the Netherlands had already fought 3 wars before James came to the throne over control of maritime trade, and the two countries remained fierce rivals. Back at home, James was trying to exert what he viewed as his divine right to rule, meaning he was in charge because God said so, over Protestant England, and Parliament was starting to get sick of it. But they didn't rebel. Why? Well, some of it comes from the want to avoid the devastation of more conflict that I mentioned earlier, but more importantly, at some point, James was going to die, and his heir, Mary, and her husband, William of Orange, were both Protestant. That was up until 1688, when James had a son who he fully intended to raise as a Catholic. This, combined with attempts to enforce Catholic doctrine on the Church of England, made Parliament snap. So, a group of 7 lords and members of Parliament wrote a letter to William and Mary, requesting that they invade England and oppose James II, and offering them help to do it. William's Dutch army landed in England on November 5th, 1688, and James bravely ran away to France. He also tossed the Great Seal of the Realm into the River Thames, which Parliament decided to interpret as tantamount to abdication. William and Mary were crowned as co-monarchs of England, Scotland, and Ireland in 1689. So why was the Glorious Revolution glorious? Well, for one, it was bloodless, at least in England. But more importantly, it ended a fierce debate that had been going on in the country since Charles I got into his first bout with Parliament, really since the Magna Carta. Who should have real power, Parliament or the monarch? And the answer was resoundingly, when James had a son who he fully intended to raise as a Catholic. This, combined with attempts to enforce Catholic doctrine on the Church of England, made Parliament snap. So, a group of 7 lords and members of Parliament wrote a letter to William and Mary, requesting that they invade England and oppose James II, and offering them help to do it. William's Dutch army landed in England on November 5th, 1688, and James bravely ran away to France. He also tossed the Great Seal of the Realm into the River Thames, which Parliament decided to interpret as tantamount to abdication. William and Mary were crowned as co-monarchs of England, Scotland, and Ireland in 1689. So why was the Glorious Revolution glorious? Well, for one, it was bloodless, at least in England. But more importantly, it ended a fierce debate that had been going on in the country since Charles I got into his first bout with Parliament, really since the Magna Carta. Who should have real power, Parliament or the monarch? And the answer was resoundingly Parliament. As a condition of becoming co-monarchs, Parliament had Mary and William agreed to sign the English Bill of Rights in 1689. It limited the powers of the monarchy, strengthened Parliament, and entrenched democratic rights at the heart of the state. The revolution also resulted in the Act of Settlement of 1701, which formally set out the rules for succession to the throne, and ended centuries of random royals attempting to grab power. Though it also banned Catholics from wearing the crown. But from William and Mary onwards, English and later British monarchs progressively gave up more and more of their power and became the figureheads that the monarchy is today. Hey look, we made it to the end of the video. If you enjoyed it, don't forget to hit the subscribe button and the bell so you can get notified about our next one. I've been James, and thank you. ठीक है, तो इतना क्लियर हुआ. इसको ब्लडलेस रेवोल्यूशन भी बोला जाता है. इट इज ऑल्सो नोन. सो जेम्स, ये 2 प्रोटेस्टेंट बच्चे थे जेम्स के, और एक सन था हु वाज नोन एज जेम्स एडवर्ड द ओल्ड प्रिटेंडर. नाउ विद हिम व्हाट हैपेंड आफ्टर मैरी एंड क्वीन एन. ठीक है, ये तो क्वीन बहुत बाद में बनेंगी जब विलियम एंड मैरी जो है दे विल गो. ठीक है, नाउ व्हाट हैपेंस इज दैट जेम्स का कोई बेटा नहीं हो रहा होता है, जैसे एज वी हैव डिस्कस्ड इन द वीडियो. ही डिड नॉट हैव अ सन. ठीक है, एंड इवेंचुअली व्हेन ही हैज दैट फ्रॉम हिज सेकंड वाइफ से उनको ये बेटा होता है. सो ही इंटेंड्स, जेम्स जो है, ही इंटेंड्स टू मेक हिम अ कैथलिक king.
अब इंग्लैंड में पॉपुलेशन ही प्रोटेस्टेंट्स की was ज़्यादा, so people were again enraged because Charles I was also supporting Catholics, Charles II was also supporting Catholics, ठीक है. Then Charles II के illegitimate children में से एक था Duke of Monmouth, ठीक है, Duke of Monmouth, who was executed in 1685 because of his illegitimate claim to the throne. ठीक है, तो इसके बाद जेम्स टू ही वॉज देयर, ठीक है. जेम्स एडवर्ड को ये बनाना, जेम्स टू ही वांट्स टू मेक हिम द कैथोलिक किंग अगेन. नाउ पीपल गो टू विलियम ऑफ ऑरेंज एंड मैरी द सेकेंड एंड से दैट फिर दोबारा से कैथोलिक किंग बनाने की वो षड्यंत्र, एक सम सॉर्ट ऑफ व्हाट डू वी कॉल इट, कंट्रोवर्सी को क्या कहते हैं, कॉन्स्पिरेसी है ना, षड्यंत्र रचा जा रहा है. सो यू जस्ट गो डिपोज योर फादर फ्रॉम द थ्रोन एंड टेक वहां पे मतलब वहां पे रूल करना शुरू कर दो. सो बोथ ऑफ देम दे रूल्ड, ठीक है, दे रूल्ड टुगेदर, विलियम ऑफ ऑरेंज एंड मैरी द सेकेंड. ठीक है. So what happened वैसे, how Queen Anne became the queen, because eventually both of them they die and they had no children. So कोई भी सक्सीड नहीं कर सकता था, तो ऑफ कोर्स मैरी की सिस्टर क्वीन एन, ये जो है 1702 में शी बिकम्स द क्वीन व्हेन बोथ ऑफ देम दे डाई. ठीक है. So eventually she will also not have a child and then अपने किसी दूर दराजे के cousin को जो है she will give the throne to him. So I hope now it is clear. तो ये 1688 में, ये एक important year है, 1688 में the glorious bloodless, थोड़ा ऊपर कर रही हूँ मेरी कमर जाएगी, bloodless revolution happened to remove James the Second from the throne. ठीक है, तो ये हो जाता है. I hope now the chart is clear. तो इसके बाद हमारी क्वीन एन आती हैं, देन द एक्ट ऑफ सेटलमेंट, और ये बोल दिया जाता है कि अब जो है 1689 में द राइट्स वाली जो बुक ऑफ राइट्स वो भी पब्लिश कर दी जाती है कि अब मोनार्की के राइट्स जो है वो लिमिटेड रहेंगे. ठीक है. एक्ट ऑफ सेटलमेंट के थ्रू ये कि अब कोई भी आके किंग नहीं बनेगा, ओनली द प्रोटेस्टेंट्स they will be allowed to rule England, should be Hanoverian, क्योंकि इसके बाद Hanoverian kings की वो स्टार्ट हो जाती है. ठीक है. So I hope till now the history is pretty much clear to you all. Just one more video and then we will be starting with the act of settlement. A settlement of 1701 transformed the British monarchy from chaos to the tumultuous 17th century, and discover how the Act of Settlement of 1701 transformed the British monarchy from chaos to continuity. This landmark legislation established key principles that still shape royal succession to this day, bringing stability and unity to the monarchy while setting a standard for constitutional monarchy around the world. From chaos to continuity. The Act of Settlement in 1701 was a decisive moment in British history, as it marked the end of a chaotic period of political turmoil and the beginning of a new era of stability and continuity in the monarchy. The Act was a response to the events of the late 17th century, which had seen a series of bloody civil wars, religious conflict,
and political upheaval, as well as the exclusion of Catholic James II from the throne. The Act of Settlement provided a legal framework for the regulation of royal succession, and its provisions still shape the laws and practices of the British monarchy to this day. The Act of Settlement, a milestone in British history. The Act of Settlement of 1701 was a comprehensive piece of legislation that aimed to restore stability and order to the monarchy following a period of turmoil and uncertainty. The Act was a result of negotiations between King William III, the ruling monarch at the time, and the English and Scottish parliaments. It was designed to clarify the rules of royal succession and to ensure that future monarchs would be Protestant and committed to the Church of England. One of the key provisions of the Act of Settlement was the exclusion of Catholics from the throne. This was seen as a necessary measure to prevent the return of Catholic rule, which had been a source of conflict and instability in the late 17th century. The Act also set out the order of succession, which was to be determined by bloodline and descent. This provided a clear and predictable line of succession and helped to avoid the confusion and disputes that had plagued the monarchy in the past. The Act of Settlement also established the principle of parliamentary consent, which meant that the monarch could not ascend the throne without the approval of the English and Scottish parliaments. This was a major shift in the balance of power between the monarch and the legislature, and helped to ensure that the monarch would be subject to the will of the people. The impact of the Act of Settlement. The Act of Settlement had a profound impact on the regulation of royal succession and on stability and unity of the monarchy. The Act provided a clear and predictable line of succession and helped to avoid the disputes and confusion that had plagued the monarchy in the past. By excluding Catholics from the throne, the Act helped to prevent religious conflict, and by requiring parliamentary consent, it ensured that the monarch would be subject to the will of the people. The Act also helped to lay the foundations for a more stable and unified monarchy by establishing the principles of succession and parliamentary consent. These principles have shaped the laws and practices of the British monarchy to this day and have contributed to its continued stability and unity. Shaping royal succession laws, the legacy of the Act of Settlement. The Act of Settlement has had a lasting impact on the regulation of royal succession and on stability and unity of the monarchy. Its provisions have shaped the laws and practices of the British monarchy and has served as a model for other countries around the world. The Act remains one of the key constitutional documents of the British monarchy, and its principles have helped to ensure the continuity and stability of the monarchy for more than 300 years. Conclusion. The Act of Settlement of 1701 was a decisive moment in British history, as it marked the end of a chaotic period of political turmoil and the beginning of a new era of stability and continuity in the monarchy. The Act provided a legal framework for the regulation of royal succession, and its provisions have shaped the laws and practices of the British monarchy to this day. The Act remains a testament to the importance of stability and continuity in the monarchy, and to the role of parliamentary consent in shaping the relationship between the monarch and the people. That concludes our video. To stay up to date on all our new content, don't forget to hit the like button, subscribe to our channel, and turn on All right. So here what we see is that हमारे जो इतने टाइम से क्योंकि people, the parliament etc. they were also fed up. They were also fed up because of this particular stance of somewhere or the other कि बार बार लड़ाइयाँ हुई जा रही हैं लड़ाइयाँ हुई जा रही है तो that's why when the glorious revolution took place तब कोई blood shed नहीं हुआ था ठीक है so this is what we get to see तो यहाँ से history हमारी आगे बढ़ती है and then we move forward with Queen Anne and I hope it is pretty much clear now ठीक है now discussing the literary time period that we all have here इसमें आपको पहला चीज देखने के लिए मिल रही है that is your emergence of periodicals ठीक है मैं थोड़ा बताती हूँ आप लोगों को rise of novels etc but थोड़ा just try to get an idea from here so when we talk about the literary background you guys should know that during this particular time period you know what happened was that lots and lots of coffee houses started getting established ठीक है अच्छा इनका रोल क्या हुआ अब कॉफी हाउसेस का इनिशियली व्हाट यू दिस इज नोन एज द एज ऑफ एनलाइटनमेंट द एज ऑफ रीजन सो व्हाट यूज्ड टू हैपन प्रीवियसली वाज दैट ओनली पीपल हु वर फ्रॉम द अरिस्टोक्रेसी दे वर अलाउड
to go to the king, have मतलब वहाँ पे जाके meetings करना, चाय वाय पीना, so on and so forth. This used to happen पहले. Now with people coming to terms about their humanistic approach, about their own selves, their तो इस distinction को खत्म करने के लिए एक quality वाली चीज लेके आने के लिए now coffee houses were established. क्यों? क्योंकि एक तो होगी, इससे क्या मिलेगा आपको? गॉसिप मिलेगी, ठीक है, आपको चिट चैट करने का मौका मिलेगा. And these coffee houses were open for all people regardless of their economic status. ठीक है, तो यहाँ पे लोगों ने, हमको ये पता है कि जो कोर्ट था, कोर्ट में there was no equality. तो लोअर क्लास भी नहीं बोल सकते, अगर हम बोले कॉमन मैन जो है, ठीक है, हु वर फ्रॉम द लोअर क्लास स्टेट ड्यूरिंग दिस टाइम पीरियड, दे वर नॉट अलाउड टू कम हैव अ कॉन्वर्सेशन विद द किंग एज सच. ठीक है, तो कोर्ट्स ओनली prejudice करती थी towards the people who were from the aristocracy, the nobles, the higher class ones. Now when the people will get a place where they can sit, ये जो coffee houses थे, ये coffee houses, they were providing equality. So people from all walks of life, they used to come chit chat. पता है क्या हो रहा है यहाँ पे, ये हो रहा है, वो हो रहा है. तो gossip बड़ी चलती थी during this time period. So coffee houses were really famous. Coffee houses became really famous. And during this time period, an educated person was considered to be enlightened, क्योंकि वो literary works produce भी कर सकता था. ठीक है, तो literary background में आप देखेंगे कि कोई भी मतलब वैल्यू होती थी एजुकेशन की. अब कि एक एजुकेटेड इंसान जो है, he was considered to be intellectual. ठीक है, he was considered to be intellectual, enlightened, and was thought of as he was producing literary works जो है उनको प्रोड्यूस कर सकता है या करता है. ठीक है, तो ये पहचान होती थी एजुकेटेड पीपल या पर्सन्स की यहाँ पे. ठीक है, एंड ऑल्सो नाउ इसी पॉइंट ऑफ टाइम पे एक आप लोग को, अगर आपने देखा होगा, आई आस्क्ड यू ऑल टू गो and read about the two groups that we see in this particular time period, which are known by the name the Whigs and the Tories. ये अभी हिस्ट्री थोड़ा डिस्कस कर रहे हैं, इसीलिए साथ में डिस्कस कर लेते हैं. तो आपके दो ग्रुप्स में, हमने एक वीडियो देखी थी उसमें भी दिखाया उन्होंने, there were two groups which were divided. And why are we discussing these people? Because Jonathan Swift, Richard Steele, Joseph Addison, ठीक है, आपके Daniel Defoe as well. So people will be either being Whigs or Tories. उनकी political inclinations would be somewhere or the other, and these political inclinations will be showing up in the content that they will be writing, the periodicals that they will be publishing. ठीक है, so एक बार इन Whigs and Tories के बारे में लिख लेते हैं. These were two parties or groups that were present in that time का England, the Whigs and the Tories. Now who were the Whigs? The Whigs were the merchant class people. इसको याद रख लेना W से, working class. ठीक है, so they were the merchant class. The merchant class people. They used to they valued freedom. Valued freedom of people and उनके राइट्स. पीपल और लोग और उनके राइट्स की फ्रीडम को वैल्यू करते थे. ठीक है, so what we see during this particular time period, an important thing happened, that Robert Walpole, आपने पता नहीं नाम सुना होगा या नहीं, रॉबर्ट वॉलपोल, हॉरेस वॉलपोल का नाम सुना है किसी ने? हॉरेस वॉलपोल, द कासल ऑफ Otranto, द गॉथिक नॉवल दैट विल बी रिटन बाय हिम. So Horace Walpole के पापा थे Robert Walpole, and Robert Walpole became the first, he was a Whig, he became the first prime minister of Great Britain.
ठीक है. So Robert Walpole, who was a Whig from the merchant class, he became the first prime minister of the Great Britain, Scotland, England, the Great Britain. ठीक है. So this is an important fact. ये इधर इनके साथ ही एसोसिएटेड है. फिर आ जाते दूसरी क्लास पे. The Tories. Now the Tories were the ones who were the landowners. मतलब नोबल क्लास से बिलोंग करते थे. तो W से विग्स को याद करके वर्किंग क्लास, मर्चेंट्स से फ्रीडम को वैल्यू करते थे, ऐसे याद रख लेना. टोरीज फिर उसका ऑपोजिट अपने आप हो जाएगा. ठीक है. नाउ दे supported the king and his divine right. ठीक है. So these were the two political parties that were there in England. My shoulders. ठीक है. So these were the things that were happening. Now periodicals and newspapers पे आ जाते हैं. Now अगर आप देखेंगे in your book only on page number 134 you can read that there was emergence of periodicals. Coffee houses led people to sit chit chat over coffee. ठीक है. Gossip about the things that are going around. Could be personal, could be political, could be controversial, anyone's. So these gossips and chit chats, they provided some sort of a way for getting them these things published. ठीक है. लोगों का इंटरेस्ट जगाने के लिए. ठीक है. सो आप देखेंगे मैं आप लोग को एक ना वो लिखवा रही हूँ. आई एम गोइंग टू मेक यू गाइज नोट डाउन periodicals and newspapers associated with this age. ठीक है. along with what you need, ये पोप एंड जॉनसन दोनों की एज के periodicals रहेंगे. तो इनको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में हम नोट डाउन करने वाले हैं. ठीक है. So now let's move forward to writing the periodicals and newspapers of this age. So chronologically, as I told you, number 1, 1536 गैजेटा. कुछ आपकी बुक में दिए हो सकते हैं, नहीं भी दिए हो सकते हैं. ठीक है. First periodical, this was the first periodical published in Europe. ठीक है. ये याद रखना है, in Europe. Then we have 1622 to 1632 कोरांटोस पब्लिश होने लगे थे. What were कोरांटोस? It was the first regular English journal. Regular यानी daily. Journal. So it was regular था यानी हर वीक में पब्लिश किया जाता था रेगुलरली. एंड इट वॉज बेस्ड अबाउट, बेसिस क्या थे? इट वॉज अबाउट फॉरेन वॉर्स. ठीक है. इट वॉज अबाउट फॉरेन, it was about the wars that are going around in the world, etc. And किसके द्वारा था? It was by two people, Thomas Archer and Nicholas Bourne.
Nicholas Bond. दैट इज कोरांटोस, CORA, ठीक है, मैंने ओ लिख दिया, ये ए है, ठीक है, कोरांटोस. नेक्स्ट मूव फॉरवर्ड करें. देन वी मूव फॉरवर्ड टू 1702. 1702 से 1735 तक ये चला था, जो आपकी बुक पे नाम दिया हुआ है द डेली कॉरेंट, ठीक है. द फर्स्ट डेली न्यूज़पेपर केम एंड लास्टेड अंटिल 1735. So it was known as the Daily Courant. It was first daily newspaper or paper, ठीक है. It was published daily, ठीक है. It had a single page और ads होती थी at the back, advertisements पीछे छपी हुई होती थी. And the printer of the Daily Courant, printer was a woman named Elizabeth Mollett. ठीक है. Then we have the next one, 1704 to 1713. Again important because ये आपके डैनियल डीफो का वो होगा, ये पूछा गया है पेपर में. The review, it was by Daniel Defoe. It was a Whig paper, तो मर्चेंट क्लास वाले लोगों के लिए और उनके ओपिनियंस वाला छपता था. It was published 3 times a week, published thrice weekly, and it was about उस टाइम की पॉलिटिक्स. करंट मतलब उस टाइम के करंट पॉलिटिक्स, ठीक है. नोट डाउन प्लीज. ठीक है. नेक्स्ट फॉरवर्ड 1709. अच्छा, मैं इनको इन डेट्स के हिसाब से क्रोनोलॉजिकली लिखवा रही हूँ. दीज आर द इयर्स जब तक वो चले थे, ठीक है. तो इनको फॉलो करते करते मैं लिखवा रही हूँ. देन वी मूव फॉरवर्ड टू 1709 to 1711. The name was The Tatler, very important. The Tatler, very important. It was by Richard Steele. By Richard Steele, very important periodical writer of this age. Now the Tatler, इसके 271 issues हो चुके थे, ठीक है. And it was also published thrice weekly. इसका क्वेश्चन क्या आया हुआ है? क्वेश्चन आया हुआ है कि कब कब पब्लिश होता था. इट वॉज पब्लिश्ड ऑन ट्यूजडेज, थर्सडेज, TTS करके याद करा था मैंने, एंड सैटरडेज.
So Tuesdays, Thursdays, Saturdays. ठीक है. And Richard Steele, he used a pseudonym. जो भी इस पर्टिकुलर पेपर में आर्टिकल्स पब्लिश होते थे वो यूजुअली विद द नेम आइजैक बिकरस्टाफ होते थे. ठीक है. अब मैं मार्क कर देती हूँ यहाँ पे, आप लोग को बता देती हूँ. दिस इज योर PYQ. दिस इज योर PYQ. ठीक है. पिछले टैटलर तो बहुत पूछा गया. ठीक है. एंड देन ये 1704 में किसका था? डैनियल डीफो का था. ये PYQ था. ठीक है. देन वी मूव फॉरवर्ड टू अनदर हियर. अच्छा, इसमें और भी सॉरी चीज़ें लिखने वाली हैं. It was about, what was it about? Tatler was about literature. It was about literature, was about society, it was about fashion, news, it was about gossip. And there were certain contributors. मतलब कौन कौन पेपर्स में लिखते थे? Contributors में we have Joseph Addison, again an important, जिनको हमने मिल्टन की एज में एक उसमें कवर करा था ना, स्पेक्टेटर वाले उसमें. Then we have Joseph Addison and Jonathan Swift, Gulliver's Travels वाले. These were the people who also used to write in this particular periodical. Then we have the next one. The next one was from 1710 to 1714, known by the name The Examiner. The Examiner. It was a single sheet paper, a single sheet newspaper. And most importantly, it was a Tory paper. ठीक है. तो जैसे अगर हम देखते हैं डैनियल डीफो का जो था, it was for the Whigs, about the Whigs, for the Whigs. Examiner was for Tory paper about politics. So Tories used to read the Examiner, the Whigs used to read apna the Review. And who was the editor? Editor is important, very important. The editor was Jonathan Swift. The editor was Jonathan Swift. Then we have 1711 to 12, again an important one. हमारा आ जाता है स्पेक्टेटर. तो टैटलर, स्पेक्टेटर, एग्जामिनर ये important है. Review भी of course. The Spectator now was found by Joseph Addison and Richard Steele. ठीक है. इसके 135 issues हुए थे. It was issued for 135 times and it was published, this is an important fact, it was published daily except Sundays. तो Sundays को नहीं publish होता था. ठीक है. Now who were the contributors? Contributors were Joseph Addison, John Hughes, and Eustache Budgell.
मोर इम्पॉर्टेंटली स्पेक्टेटर के बारे में एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट है दैट 1714 में इट वॉज रिव्यूड अगेन, 1712 में बंद हो गया था, रिव्यूड अगेन फॉर 6 months by Addison. ठीक है, नोट डाउन। ठीक है, सो इसके 2-3 कोट्स जो आपके PYQs में आए हैं स्पेक्टेटर को लेके वो मैं लिख रही हूँ, देन आई शिफ्ट नीचे इसको। ठीक है, सो इसके लिए बोला गया था टू enliven morality with wit and to temper wit with morality। किसने बोला था ये स्टील ने बोला था। दिस वॉज सेड बाय स्टील about the spectator, explaining why is it used. Next दूसरा बोला गया था the aim is to bring out, and I quote, philosophy out of the closets and libraries schools and colleges to dwell in clubs and clubs and assemblies, at tea tables and coffee houses. This one was said by Addison, Joseph Addison. ठीक है, next we move to 1713. Again an important one. This one was known by the name the Guardian.
It was a short-lived one. ये आपके अगस्त 2024 वाला जो रीनेट पेपर हुआ था उसमें पूछा गया है गार्जियन के बारे में, शॉर्ट लिव्ड कौन सी थी, ठीक है। द गार्जियन, द फाउंडर इसके थे रिचर्ड स्टील एंड कंट्रीब्यूटर्स were Addison, Thomas Tickle एंड अलेक्जेंडर पोप। अच्छा, शॉर्ट लिव्ड थी तो कितने महीने चली थी ये? सिर्फ आपकी मार्च से अक्टूबर तक चली थी, मार्च टू अक्टूबर 1713 तक चली थी, दैट्स वाई शॉर्ट लिव्ड। ये आपका PYQ रहा है अगस्त 2024 का। देन आपकी आ जाती है नेक्स्ट वन, 1731 टू 1922। देखो कितनी लंबी चली है ये, ठीक है। इट वॉज नोन बाय द नेम द जेंटलमैन्स मैगजीन। बाय किसकी थी ये? बाय Edward Cave. Now, certain facts regarding the Gentleman's Magazine. It was the first to use the word magazine. Okay. And it was published monthly. It was published. Then founder इसके एडवर्ड केव थे, ठीक है। It was about literature, it was about society, it was about the politics of those times. एंड कंट्रीब्यूटर हमारे सैमुअल जॉनसन थे इसमें। एज ऑफ जॉनसन, ठीक है। अच्छा, इसके पब्लिशर कौन थे? द पब्लिशर वाज जॉन निकोल्स। दिस वन हैज आल्सो बीन योर PYQ। गार्जियन भी आपका PYQ बनी हुई है। जेंटलमैन्स मैगजीन वाज आल्सो अ PYQ। गिविंग यू टाइम टू नोट डाउन, ठीक है। ये सारे पीरियोडिकल्स, ये एज ही पीरियोडिकल्स की वजह से जानी जा रही थी, तो ये बड़े अच्छे नोट्स आपके प्रिपेयर हो जाएंगे। ठीक है। देन वी हैव द नेक्स्ट वन, 1732 to 1785, known by the name the London Magazine.
इट वॉज अ बाय मंथली मैगजीन, यानी महीने में 2 बार पब्लिश होती थी. बाय monthly it was published, and it was about art, literature and miscellaneous topics. ठीक है. एंड इसके पब्लिशर भी जॉन निकोल्स थे. पब्लिशर was जॉन निकोल्स. एंड इसके फाउंडर कौन थे? आइजैक किम्बर. What about the contributors? Contributors were William Wordsworth, चार्ल्स लैम्ब, ये रोमांटिक एज वाले राइटर्स हैं. चार्ल्स लैम्ब, थॉमस डी क्विंसी, जॉन कीट्स एटसेट्रा. John Keats, etc. All right. Next up, we have 1733 to 35. The Bee. This one was in England. ठीक है. It was about polite society. Polite society. And who was the founder? The founder was Eustache Budgell, who was a contributor. Eustache Budgell. Right? He was criticized by Pope. He was criticized by Pope in the Dunciad and the epistle to Dr. Arbuthnot. ये इसके बाद अगर आपको पता होना चाहिए, वो एक इम्पॉर्टेंट नोट है जो मैं यहीं पे बना रही हूँ. नोट, सेम नेम की एक और मैगजीन थी 1759 में, लेकिन वो आई थी 1759 में आई थी. उसका नाम भी द बी था, बट इट वाज अ मैगजीन. इट वाज फाउंडेड बाय ओलिवर गोल्डस्मिथ. ठीक है. तो ये दोनों नाम सेम है, इसलिए मैंने साथ में लिखवा दिया. ये लिख लीजिए. All right.
Then we have the next one, The Female Spectator 1744, very important females के viewpoint के लिए, जैसे 1744 to 46, known as the Female Spectator. पूछा गया, ये PYQ रह चुका है आपका, और इसकी फाउंडर भी, फाउंडर was Eliza Haywood. Eliza Haywood. It was the first periodical for women by a woman. First periodical for women by a woman. It was about female domesticity, it was about bonding, relationships, and full of advice for women. ठीक है. And then the last one, which is important, it is 1750 to 53, known as the Rambler. इसके पब्लिशर कौन थे, फाउंडर थे इसके, इसलिए इम्पोर्टेंट है, सैमुअल जॉनसन. PYQ. Other things about it, इसके 208 issues हुए थे, and it was published twice weekly on Tuesdays and Thursdays. And publisher was John Payne, Payne. It contained a single anonymous literary essay for the middle class. For the middle class. अच्छा, कुछ चीज़ें आपको आपकी बुक में लिटरेरी उसमें दी हुई हैं. राइज ऑफ नॉवेल्स इन दिस एज वी सी, धीरे 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 नॉवेल्स जो है, वी सी अ ट्रांजिशन. डैनियल डीफो जो है, ही विल बी पेनिंग डाउन रॉबिन्सन क्रूसो, ठीक है. एंड देन वी हैव सेंटिमेंटल कॉमेडी. सेंटिमेंटल कॉमेडी में यू कैन सी कोर्टली रिफ्लेक्टेड द अमोरल एंड डिसोल्यूट कल्चर ऑफ द कोर्ट,
It was a reaction against sentimental drama, gave importance to feelings, sincerity and ethical values. Hence, it is also known as the age of sensibility that we did. ठीक है, तो इसको पढ़ लेंगे आप एक बारी. Then we have Graveyard School of Poetry. We have literary works in the Age of Enlightenment. When we talk about the Graveyard School of Poetry में there were poets. Specifically, अगर हम इनके नाम देखें, we have Thomas Gray, we have Robert Blair, Edward Young, Thomas Parnell. These are the 4 major poets. जिसमें सबसे important आपके कौन हो जाते हैं? That is your Thomas Gray. So for your homework tomorrow that you all will be doing, होमवर्क में आप लोग ग्रे का एक वर्क है, एलिजी रिटन इन अ कंट्री चर्चयार्ड. एलिजी रिटन इन अ कंट्री चर्चयार्ड. इसके आप इंपॉर्टेंट कोट्स पढ़ोगे, ओपनिंग क्लोजिंग लाइंस पढ़ोगे, ठीक है, एंड यू विल रीड इट्स इंट्रोडक्शन, यू विल रीड फ्रॉम द बुक एज वेल. ठीक है. अच्छा, कमिंग बैक अगेन टू द पॉइंट दैट आई वाज ट्राइंग टू टीच यू ऑल अबाउट द ग्रेवयार्ड स्कूल ऑफ पोएट्री. ग्रेवयार्ड एज द नेम सजेस्ट्स, दीज पोएट्स वर सो मच सो ऑब्सेस्ड विद डेथ, डीके, तो उसके ऊपर ये पोएट्री लिखते थे. ठीक है. सो दैट इज व्हाट वी सी, ग्लूमी इमेजेस, द एटमॉस्फेयर इज ग्लूमी दैट वी सी. ठीक है. देन वी हैव ट्रैवलॉग्स. नाउ ड्यूरिंग दिस पर्टिकुलर टाइम पीरियड द अपर क्लासेस, 5वीं 6वीं लाइन में आओ, दैट्स द इंपॉर्टेंट वन. The upper classes believed that going on the grand tour was crucial for their education as it exposed them to different customs and cultures. Grand tour में they used to be like कि हाँ हम अलग अलग जगह घूम के आ रहे हैं. तो it was considered to be एक तो mind opening लोगों के लिए, लोगों के entertainment के लिए also. So travelogues were also written here. Then we have use of heroic couplet. Who will use heroic couplet? When we discussed Chaucer in the 14th century, the very first second day जो मैंने age of Chaucer में, when we were discussing terms, we tried discussing about that Chaucer is the person who has coined this particular term heroic couplet. But Alexander Pope will use in his Rape of the Lock. So heroic couplet वापस से यूज होना शुरू हो जाएगा. लिटरेरी क्लब्स एंड सोसाइटीज विल बी फॉर्म्ड. बच्चे, ये लिटरेरी क्लब्स एंड सोसाइटीज में पहली आपको किटकैट क्लब देखने के लिए मिलेगा. ये प्लीज पढ़िए, इसको अंडरलाइन करिए. दीज वर किटकैट क्लब वाले लोग जो थे, दे वर विग्स. ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है. किटकैट क्लब वाले लोग विग्स थे, यानी मर्चेंट क्लास से बिलोंग करते थे इन लंदन. एंड इनमें राइटर्स आप नोट डाउन करेंगे, स्टील, एडिसन, जॉन लॉक, जॉन वैनब्रो, रॉबर्ट वॉलपॉल, विलियम कॉनग्रीव. ठीक है. दे फर्स्ट मेट at the tavern of Christopher Cat to eat a dish called Kit Kat, जहां से इसका नाम क्या बना, Kit Kat Club बन गया. Then we have Scriblerus Club. This group was created, ये टोरी पार्टी का था, विग पार्टी का Kit Kat था. ठीक है. तो टोरी पार्टी का स्क्रिबलरस क्लब था. टोरी पार्टी केम टुगेदर. इसमें पोप थे, जॉनथन स्विफ्ट, जॉन गे, थॉमस पालन, जॉन आर्बुटनॉट. जॉन आर्बुटनॉट वाज अ फ्रेंड ऑफ अलेक्जेंडर पोप, जिसके ऊपर वो एपिस्टल टू डॉक्टर आर्बुटनॉट भी लिखेंगे. It was पर्पस क्या था? To make fun of people who did not have much knowledge, but they were trying to write bombastic works full of elevated language etc. तो इसका नाम दिया गया था Martinus Scriblerus के ऊपर, who was a terrible writer inspired by John Dryden's character Martin Marall. ठीक है. So Scriblerus was a word used to insult talentless writers during the 18th century. फिर आ जाती है आपकी the Society of Antiquaries. In the Society of Antiquaries, antiquaries कौन होते हैं? जिनको पुरानी चीज़ें, relics etc., पुरानी historical चीज़ें कलेक्ट करने का शौक हो, बुक्स हो गई, वुड्स हो गई, कुछ भी, XYZ, any relics or anything. ठीक है. Artifacts, documents and cultural protects old things. It started in London, England in 1707. People who love archaeology, history, old stuff joined the society. ठीक है. So this was the club which was known as the Society of Antiquaries. So 3 अलग अलग clubs were formed. Kit Kat वाला was a club of the Whig people. Then we have Scriblerus Club of the Tory ones, जहाँ पे वो talentless writers जो bombastic language use करते थे उनको mock करते थे. And then we have the Society of Antiquaries, पुरानी stuff, artifacts etc. को बचा के रखने वाले लोग. अच्छा, कल आप ये पढ़ के आएंगे. You will also be reading the other graveyard poets. एक बार उनको go through कर लीजिएगा. ठीक है. So we will meet. और ओलिवर गोल्डस्मिथ की 2 पोम्स ही हैं. ओलिवर गोल्डस्मिथ की
2 पोम्स ही हैं, एक है द ट्रैवलर, इसकी भी ओपनिंग लाइंस इन समरी पढ़ लीजिएगा, ठीक है, इसकी भी समरी भी पढ़नी है, ठीक है, बुक में से भी, विकिपीडिया से इंट्रो एंड एवरीथिंग। एंड दूसरी है द डिजर्टेड विलेज। तो ये 2 पोम्स हैं, 2 ही पोम्स हैं रिटन बाय ओलिवर गोल्डस्मिथ, इनकी समरी आप लोग पढ़ के आएंगे, ठीक है। कल मिलते हैं, विल बी डिस्कसिंग अबाउट द अदर राइटर्स, नॉन फिक्शनल राइटर्स एज वेल, विच आई थिंक हैव नॉट बीन प्रोवाइडेड इन योर बुक, ठीक है, तो उन नॉन फिक्शनल राइटर्स को भी कवर करेंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग, हैव अ गुड डे, बाय बाय।